हेलो दोस्तों, देखिए ये आसूस का आया है आसूस वीवो बुक। इसमें रैम अपग्रेड करना है और एसएसडी को अपग्रेड करके स्टोरेज बढ़ाना है। देखते हैं, मेरे पास ऐसे टूल है, चलिए देखते हैं। देख रहे हैं, इसमें 4 GB है और 256 GB SSD लगी हुई है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है और यहाँ पे रैम लगाने का जगह है, स्टोरेज बढ़ाने के लिए रैम का। पहले हम लोग रैम लगा लेते हैं। ये क्रूसेल का है, 8 GB DDR4 रैम। इसमें HDD का केस है, ये कंपनी के साथ ही आता है। जब लैपटॉप परचेज करते हैं तभी देता है। पाँच 512 GB SSD Hikvision।
यहाँ पे स्पेस है, इसको खोलना पड़ेगा। देखते हैं इसकी चट्टी कैसे पहना जाएगा। इसका यार रैपर HID में लगाने में तो इसका ज़रूरत पड़ता है, इसमें नहीं तो इसमें ज़रूरी नहीं पड़ता, क्योंकि ये बॉडी रहता है। जैसे कि देखते हैं HID में ऐसा रहता है, तो इसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है खुद। इनका चेक कर लेते हैं।
देखो यहाँ 12 GB हो गई स्टोरेज, 12 GB देखो, 4 GB पहले से थे और फिर से ऐड हो गया 8 GB, 12 GB। ये देखते हैं, इसका शक्ल मुझे ठीक नहीं लग रहा। चार सौ 76 GB। चलो इसको फिर टाइप कर देते हैं।
इसी तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कितना देर लगता है, हमको रैम एक्सटेंड कराना है और जो कि हार्ड डिस्क एक्सटेंड कराना है, तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है।